4 डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं। तो 4 आतंकी जो ट्रक में थे वो मारे गए हैं। 8 बड़े हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें 7 AK-47 और 1 M4 राइफल बरामद हुआ है। 3 पिस्टल्स बरामद हुए हैं और भी कुछ मैगजीन्स, एमुनिशन और पाउच वगैरह भी बरामद हुआ है, जिसकी जांच चल रही है। जांच मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद मजीद खुलासा किया जाएगा। तो क्या आपको लग रहा है कि इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं? ट्रक ओनर अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, उसकी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस जारी है। तो कहाँ का है सर ट्रक, कुछ पता चला? ये अभी बताना मुश्किल है। तफ्तीश जब बढ़ेगी आगे तब ये आपको बता दिया जाएगा कि ट्रक कहाँ की थी, कहाँ से आई इन्फिल्ट्रेट थी। करके आए हैं ऐसा जो पहले भी इस तरह का देखा गया है? ये इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप था या नहीं था ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि ये जो गाड़ी है ये जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रही है। This is not the first time that this has happened in Sidra and Ban area and all that we have had this sort of encounters where the terrorists are being transported in trucks and other vehicles to Kashmir Valley. How they have infiltrated, after infiltration, how they have been picked up, and how the police has been ineffective in checking these people being transported in trucks from the border to Jammu and beyond. So this shows that there is some lacuna in the SOPs that the police is following at their checkpoints, which need to be revived and which need to be readjusted and which need to be scrutinized properly so that such things don't happen. Second is that we require full body scanners, at least 3 of them in Jammu region, so that whenever the truck goes, the police can verify that what is going in that truck, because we have seen that what these overground underground workers do, they make a cavity, put sandbags and other goods and materials around that cavity, and the terrorists are transported within that cavity. This is not the first time it has happened, and I don't think so it will be the last, but the police has to now pull up its socks to ensure that these infiltrators who come in from the from Pakistan, they are not transported beyond the border area into Jammu region and beyond. This is the job of the police, and the police has to now gear up properly.